क्या होता है अलार्म स्टेज में ही व्हेन द स्ट्रेसर इज टू मच फॉर यू टू हैंडल, तो आपकी बॉडी का बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स होता है, राइट? जो आपका फाइट और फ्लाइट सिस्टम है वो बहुत ज्यादा ओवरवेलम हो जाता है, विच इज व्हाट हैपेंड टू सुमन्स मदर। डिसऑर्डर में भी तो लोगों को दिक्कत होती है इन सोशल सिचुएशंस एंड दे डू हैव कम्युनिकेशन डेफिसिट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू पावरजन साइकोलॉजी। माई सेल्फ अलंकृता कौशल। तो क्या आप भी क्लास 12 के स्टूडेंट हैं एंड यू आर वरीड अबाउट योर बोर्ड एग्जामिनेशन? बाकी सारे सब्जेक्ट्स की तो प्रिपरेशन कर ली, ट्यूशंस लगा ली, प्रैक्टिस कर ली, लेकिन साइकोलॉजी को नेग्लेक्ट कर दिया कि लास्ट मोमेंट देख लेंगे। अब वही साइकोलॉजी ही आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। बट डोंट वरी, बिकॉज पावरजन साइकोलॉजी हैज गॉट यू कवर्ड. We have launched our Aarambh for Boards batch, which is specifically a crash course designed for class 12 students that will help you with your board preparation. Alright? इसमें आपको cheat sheets मिल जाएंगी, one-on-one mentorship with faculty members, sample paper practice, revision marathons for each and every unit, उसके साथ ही साथ a chance to discuss your exam strategy. Alright? तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बोर्ड एग्जाम में ही एक स्पेसिफिक सेक्शन आता है दैट इज बेस्ड ऑन योर केस स्टडीज। ऑलराइट, जहां पे आपको केस स्टडीज दे दी जाती हैं एंड यू हैव टू आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट। अब ये जो सेक्शन होता है, दिस इज ऑफन द लास्ट सेक्शन ऑफ योर पेपर एंड कई बारी इसको अटेम्प्ट करने के लिए यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम, which is why students often end up making mistakes in this section as well. तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस अप्रोच से आपको इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, एंड वी विल आल्सो प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस. सो हाउ टू अटेम्प्ट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन. आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए रीड फॉर द मेन आइडिया, नॉट डिटेल्स. आप जब केस स्टडी को पढ़ रहे हैं, आपका फर्स्ट सिंपल गोल होना चाहिए टू आइडेंटिफाई कि ये पर्टिकुलर केस स्टडी किस चैप्टर किस यूनिट से है. ऑलराइट, डू नॉट रीड इट लाइक अ स्टोरी बट रीड इट विद पर्पस. मतलब आपको पहले ग्लांस में ही पता लग जाना चाहिए कि केस स्टडी किस टॉपिक से है, किस चैप्टर से है. ऑलराइट, देन स्पॉट द की सिम्टम्स बिहेवियर. आपको केस स्टडी पढ़ने के बाद यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द की सिम्टम्स, की वर्ड्स इन द केस स्टडी. Now, based on your previous year papers, I have identified some units जिनसे बार बार repeatedly case studies पूछी गई हैं. First being your psychological disorders, obviously, then meeting life challenges and your attitude and social cognition. इन 3 यूनिट से कई बारी एग्जाम में आपसे केस स्टडीज पूछी जाती है. Alright, and then you should use this simple structure. And what is that structure? फर्स्ट स्पॉट. स्पॉट क्या करना है आपको स्पॉट करना है चैप्टर, ये किस चैप्टर से है, क्या कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज द मेन आइडिया. राइट, देन नेम क्या करेंगे, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछना चाह रहा है एग्जामिनर, यू विल नेम दैट. ऑलराइट, देन यू विल एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर फिनोमेना एंड देन फाइनली लिंक दैट कॉन्सेप्ट टू द केस स्टडी. फॉर एग्जाम्पल, आपको एक केस स्टडी दे दी गई है स्किज़ोफ्रेनिया के ऊपर. ऑलराइट, अब वहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि ये पर्टिकुलर सिम्टम कौन सा है. लेट्स अज्यूम कि इट्स आस्किंग यू अबाउट डिल्यूजन्स. ऑलराइट, सो आप आइडेंटिफाई करोगे दैट इट्स डिल्यूजन, एक्सप्लेन करोगे डिल्यूजन क्या होता है, एंड देन यू विल लिंक इट टू योर केस स्टडी कि वाई XYZ इज शोइंग सिम्टम्स ऑफ डिल्यूजन. ऑलराइट, तो ये अप्रोच से you will be attempting case study based questions in your paper. All right, so now let's practice your case study number 1. Mohsin, a 6-year-old boy, has difficulty in feeding and dressing himself, but with training from his parents has helped him to be a little independent. He faces trouble making friends outside his family and has difficulty in dealing with people in social situations.
His parents are always worried about him and are aware that he needs consistent level of supervision in daily tasks. Mohsin's brother understands his needs and what he says, but it is difficult for his peers to understand him as he lags behind them in communication and language skills. Throughout Mohsin's journey, psychologists and health workers focused on engaging his family in meaningful future planning using a variety of planning strategies and resources. This included offering them ongoing and timely information and assisting the family to understand and connect to resources. Now case study पढ़ के it is clear कि ये चैप्टर नंबर 4 से है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स से है, राइट? अब क्वेश्चंस देखते हैं. Identify the disorder Mohsin is exhibiting, distinguish it from autism spectrum disorder. अब एक चीज तो क्लियर है that it is not autism spectrum disorder, right? अब इसमें कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है? कौन से कीवर्ड्स है? 6-year-old boy, difficulty in feeding and dressing himself, difficulty in dealing with people in social situations, difficulty in communication and language skills, right? तो ये सारे keywords हैं that will help you answering this question. ठीक है? तो क्या लगता है which is the disorder Mohsin is exhibiting? So we know कि it's not autism spectrum disorder, right? उसके अलावा क्या हो सकता है? It is intellectual disability, right? Intellectual disability में क्या होता है? First, low IQ का कम होना and deficits in adaptive functioning. Alright? कई सारी लाइफ के की एरियाज में दिक्कतें फेस करना, ठीक है? So Mohsin is suffering from intellectual disability. Now why is it different? Now why is it not autism spectrum disorder? अब आप बोलोगे कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में भी तो लोगों को दिक्कत होती है इन सोशल सिचुएशंस एंड दे डू हैव कम्युनिकेशन डेफिसिट्स एज वेल, लेकिन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में सिर्फ यही 2 सिम्टम्स होते हैं, राइट? मतलब यही 2 मेन फोकस एरियाज होते हैं. बट फ्रॉम द केस स्टडी इट इज क्वाइट विजिबल दैट Mohsin suffers deficit in a lot of functional areas in his life and not just dealing with people and communication and language skills, right? तो Mohsin की जो problems है that extend far beyond autism spectrum disorder. Alright? Then, how are the symptoms that Mohsin is exhibiting different from a more severe form of that disorder? Now, this one line will help you answering this question. Training from his parents has helped him to be a little independent. Alright? तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की 4 कैटेगरीज होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर एंड प्रोफाउंड, राइट? तो माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो होती है, such people are trainable, मतलब with the help of little supervision and support, these people end up living quite fulfilling lives. Alright? अब जिन्हें मॉडरेट होती है उनको कुछ सुपरविजन की नीड होती है and they also can survive, लेकिन जिन्हें सिवियर और प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, they are dependent on others completely for their survival, right? So it is quite clear that Mohsin is trainable, so he suffers from mild intellectual disability and not the severe forms of it, right? अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मोहसिन्स डिसऑर्डर, व्हाट डू साइकोलॉजिस्ट रेफर टू क्लासिफाई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स? नाउ ये नेसेसरली इस केस स्टडी पे बेस्ड नहीं है, इट्स अ क्वाइट जनरल क्वेश्चन ओनली. तो साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं DSM, विच इज योर डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, या फिर ICD, विच इज योर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस टू क्लासिफाई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. Alright,
सो क्लिनिशियंस या साइकोलॉजिस्ट वर्ल्ड वाइड बस यही दो चीजें को इस्तेमाल करते हैं टू क्लासिफाई डिसऑर्डर्स. अब आ जाते हैं नेक्स्ट केस स्टडी पे. द फायर डिपार्टमेंट रिसीव्ड अ कॉल अबाउट अ फायर that swept through a house. The fire started with the explosion of a gas cylinder used for cooking. The injured Suman was lying on a hospital bed. She was talking to a press reporter. She expressed that her mother was in the kitchen when the incident occurred. The cylinder burst with a loud sound and the fire spread at great speed. The exit door of the house had also caught fire. Her mother shouted in panic as if she had lost all hope and she fainted in the kitchen. However, Suman was determined to save her mother. She said, I don't know how I got the energy to drag my mother to the room. I broke the window there and jumped out. My back got hurt, but without wasting any time, I sought the help of my neighbor and rescued my mother. I am happy that we are both safe. Hearing her story, the press reporter was impressed with her chivalry. Now ये सिर्फ केस स्टडी पढ़ के यू आर क्वाइट नॉट एबल टू आइडेंटिफाई ये किस यूनिट से है, किस चैप्टर से है, राइट? तो इस सिचुएशन में हम क्वेश्चंस को देखते हैं. तो क्वेश्चन क्या है? रेफरिंग टू द जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम गैस मॉडल, व्हाट इमीडिएट इम्पैक्ट डज द फायर हैव ऑन सुमन्स मदर, राइट? तो यहाँ पे गैस मॉडल की बात की गई है. ये किस चैप्टर से? चैप्टर नंबर 3, मीटिंग लाइफ चैलेंजेस, राइट? So before we answer this question, let's discuss the gas model in brief. तो gas model में क्या होता है? When you first deal with the stressor or come in contact with the stressor, तो आपकी बॉडी में सबसे पहली स्टेज होती है अलार्म स्टेज. अलार्म स्टेज में क्या होता है? आपकी बॉडी का फाइट और फ्लाइट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है. ऑलराइट, उसके बाद आ जाता है रेजिस्टेंस स्टेज. रेजिस्टेंस स्टेज में यू डील विद और कोप विद द पर्टिकुलर स्ट्रेसर, राइट? देन फाइनली एग्जॉशन स्टेज. अगर स्ट्रेसर प्रोलॉन्ग्ड हो, चलता जा रहा है स्ट्रेस, देन यू एंड अप एग्जॉस्टेड, डिप्लीटेड, एंड इट कैन ऑल्सो ऑफन लीड टू सम इलनेसेस. ऑलराइट, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि सुमन की मदर पे क्या इमीडिएट इम्पैक्ट हुआ था फायर का. So her mother shouted in panic as if she had lost all hope and she fainted in the kitchen. Alright, now at first glance आपको लगेगा कि her mother directly reached the exhaustion stage. But no. कई बारी क्या होता है अलार्म स्टेज में ही when the stressor is too much for you to handle, तो आपकी बॉडी का बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स होता है, राइट? जो आपका फाइट और फ्लाइट सिस्टम है वो बहुत ज्यादा ओवरवेलम हो जाता है, विच इज व्हाट हैपेंड टू सुमन्स मदर इन दिस केस, राइट? हाउ शी पैनिक्ड एंड फेंटेड इवन इन रिस्पॉन्स टू द फायर. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. सुमन एंड हर मदर वर एक्सपोज्ड टू प्रोलॉन्ग स्ट्रेस एज द फायर स्प्रेड. हाउ डज द जनरल अडैप्टेशन सिंड्रोम एक्सप्लेन सुमन एंड हर मदर्स कंडीशन? तो सुमन की मदर की कंडीशन के बारे में वी ऑलरेडी टॉक्ड, राइट? शी वाज इन द अलार्म स्टेज एंड शी वाज ओवरवेल्म्ड, व्हिच इज व्हाई शी कोलैप्स्ड. अब सुमन का क्या रिस्पॉन्स था? ऑलराइट, सुमन का रिस्पॉन्स था सुमन सेव्ड हर मदर, राइट? ना उसको भी नहीं पता कि उसमें कहाँ से इतनी एनर्जी आ गई, बट शी वाज एबल टू सेव हर मदर, राइट? So Suman is in the resistance stage where she is able to cope with the stressor, which was fire, right? तो ये थी आपकी केस स्टडी नंबर 2. Now let's move on to case study 3. Satish, a 20-year-old male with schizophrenia, believes that the police of the area are tracking and following him. The patrolling of the police makes him believe that they are monitoring every behavior of his. These thoughts are interfering with his studies and assignments. Satish occasionally laughs abruptly and inappropriately and sometimes stops speaking mid-sentence. He expresses concern about electronics in the room.
potentially being monitored, and asked the therapist repeatedly about patient confidentiality, stating that he wants to be sure that the police won't be informed about his treatment. His beliefs are fixed and they are unchallenged. They are challenged, and if they are challenged, his tone becomes hostile. All right. Now ये केस भी है चैप्टर नंबर 4 से, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स से, राइट? अब इसमें कीवर्ड्स क्या क्या है? स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है, ओकेजनली laughs abruptly, inappropriately, राइट? तो ये सारे आपके कीवर्ड्स हैं इस क्वेश्चन के. Now, why does Satish occasionally laughs abruptly and inappropriately? So, if you remember, one of the core symptoms of schizophrenia is right, inappropriate affect. Inappropriate affect क्या होता है? Inappropriate emotions, that is display of emotions that are not appropriate for that particular situation. Alright, तो ये क्वेश्चन में ही, इस केस स्टडी में ही आपको कीवर्ड्स दे रखे हैं which will help you identify that particular symptom. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द पेट्रोलिंग ऑफ द पुलिस मेक्स हिम बिलीव दैट दे आर मॉनिटरिंग every behavior of his. Identify and explain the symptom of the disorder being reflected in the statement. क्वेश्चन में लिखा है his beliefs are fixed and if they are challenged he becomes hostile, right? तो ऐसे fixed beliefs कौन से होते हैं? Delusions, right? Delusions are your fixed false beliefs that do not change no matter how much evidence you give for the contrary, right? So Satish is also facing delusions, or delusions of which kind? Delusions of persecution. Delusions of persecution में क्या होता है? The person starts to believe that everyone else is out to get them. सब उनके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं and they wish to harm the particular person, right? So in this case, Satish feels that the police is monitoring each and every behavior of Satish, right? And that they might harm him. So with this we are at the end of our session. I hope you enjoyed the video. अगर आपको कुछ भी doubt हो, you can always reach out to us. Alright, so thank you for watching. Bye bye.